आज क्लास को मु तुम मान स्वागत करुँच। आज आम पढ़ा जनहितकारी कार्य कि जनहित कि तुम कहीपर कल्याणकारी allocative efficiency under perfect competition that means यार अर्थ होउची कोन ना पूर्ण प्रतियोगिता मूलक बाजार रे efficiency allocation of resources ताले दक्ष भावे किपरि भाबरे आमर रिसोर्सेस गुड़िक आवंटन करा जाउछि। आजिर मुख्य आलोचनार विषय वस्तु देखिबा The fundamental problem of a society is the scarcity of resources. आमे जानिचे आमे जितेबेले कोनोसी अर्थनीति विषय रे पर्यालोचना करिबा सेतेबेले आमे निश्चित भाबरे आम मन भितर को नवा कि सबुठु मुख्य प्रॉब्लम समस्या हला कोन ना मानवीय अभाव असीम एवं रिसोर्सेस ताको परिपूर्ण करिया पय हमर जो रिसोर्सेस मिलुची अर्थनीति रे से गुडिक स्कार्स माने तार अभाव रहिछि। द स्कार्सिटी व्हिच इज ओरिजिनेटर ऑफ एफिशिएंसी ताले जेहेतु हमर संबल गुडिक स्कार्स संबल गुडिकर अभाव अछि तेनु ताको किपरि दक्ष भाव रे आमे आवंटन करि परिबा का पे ना यूटिलिटी संतुष्टि प्राप्त पाई उत्पादन पाई एवं एई रिसोर्सेस गुडी को किपरि भाबरे बंटन करा जीवो अन्य कार्य पाई। An economy is efficient when it provides its consumer with the most desired set of goods and services given the resources and technology of the economy। तले हम पाखरे टेक्नोलॉजी अछि एवं रिसोर्सेस जेतिकी अछि ताको आमे किपरि भाबरे आवंटन करिबा एवं जोथिरे हमर अर्थनीति एक दक्ष आवंटनकारी भाबे परिगणित हेबो। One of the most important result in economics is that the allocation of resources by a perfectly competitive market is efficient। तले सबुटो गोटिए प्रधान माने मूल्य हैला प्रधान अर्थ हैला गोटे अर्थनीति रे प्रधान कार्य हैला कोन ना गोटे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट रे हमर जो रिसोर्स एलोकेशन होउची दैट इज एफिशिएंट। दैट मीन्स इट इज a fact that in a perfectly competitive market that is the allocation of resources is efficient। ताले संबल गुडिकर आवंटन दक्ष भाबरे होई थाए। This result assumes that such a perfectly competitive market does not have externalities like pollution or imperfect information। ताले pollution कोन माने pollution तिले बुझी परछ ना pollution और imperfect information ताले सुचारू भाबरे हम पाखरे सत्यता नाही कि इनफॉरमेशन हम पाखरे नाही ताले एई जो रिजल्ट टी हम पाइले तार के सेठी केउ शर्त ऊपर आधारित होई अछि ना परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट डज नॉट हैव एक्सटर्नलिटीज ताले गोटे पूर्ण प्रतियोगिता मूलक बाजार रो बाह्यता नाही लाइक कोन pollution or imperfect information। Perfectly competitive market structures ensure economic and allocative efficiency and maximizing profit in perfectly competitive industry। ताले गोटिए पूर्ण प्रतियोगिता मूलक बाजार रो जो ढांचा ensures economic and ये हमकु देई थाए धारणा देई थाए कोन ना allocative efficiency हमर जो दक्ष भावे आवंटन संबल को आवंटन करिवार दक्षता एवं हमर जो प्रॉफिट लाभ प्राप्त हेउचनी ताकू केमिति सबुठारु अत्यधिक करा जाई परिबो एटार धारणा देई थाए कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ताले वी गेट प्रॉपर इंफॉर्मेशन about the allocative efficiency of resources and maximizing profit in a perfectly competitive industries। efficiency दक्षतार कोन तार संज्ञा कोन एवं
तार कॉन्सेप्ट गुड़िक कौन आम देखिए। प्रोफेसर V प्यारेटो डिफाइन्स इकोनॉमिक एफिशिएंसी आज ताले अर्थनैतिक दक्षता कहले कहा बुझाए से विषय रे प्यारेटो बोली अर्थनीतिज्ञ आमको सम्यक धारणा देचनी कि तार संज्ञा निरूपण करचनी कौन ना आन आलोकेशन इज प्यारेटो एफिशिएंट ताले प्यारेटो दक्षता बोली आमे गोटे आवंटन को कहि परिबा केतेबेले इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक वन पर्सन बेटर विदाउट मेकिंग समवन एल्स वर्स ताले आमे आम अर्थनीति रे जदि जनकू सबुठू अधिक भल भाव रखा चाहिए ताले निश्चित भाव में अन्य जनकर किसी संबल को आमको कमेवा को पड़ो ताऊपर किसी रिसोर्सेस कम करने को पड़ो ताकू तैयारी करने को किसी रिसोर्सेस कम करने पड़ो नले जेमती धर दुईटी गुड़ ब्रेड एंड बटर अच्छी ताले आमे जदि कहबा एफिशिएंट आलोकेशन करबा केतेबेले एंड जदि गोटे आर उत्पादन एफिशिएंटली हेइची दक्षता दक्ष भाव में हेइची ठीक भाव में हेइची एवं संपूर्ण मात्रा रे हेइची ताले गोटिकर मात्रा को आमे जदि बढ़ाइया को चाहिबा ताले अन्य गोटीर मात्रा को हमको कमेया को पड़िबो नले आमे रिसोर्स एलोकेट करि परिबा नाही जेतेबेले ऑल दी रिसोर्सेस आर फुली यूटिलाइज जेतेबेले सबु जाक रिसोर्सेस फुली यूटिलाइज हेइची संपूर्ण भाव में वितरण करा जाई पाछि आवंटन करा जाईछि और नियोजित करा जाईछि। Pareto efficiency in resource allocation requires efficiency in production which is possible only with technically efficient allocation ताले एठी गोटे कोन efficiency in production केते बेल हबो ना technically efficient allocation of resources and technical efficiency could be achieved with efficient allocation of resources ताले एठी दीटा जिंस हमहु देखिया पड़िबो कोन ना गोटे हला टेक्निकल एफिशिएंसी आउ गोटे हला कोन ना दैट इज जोटा का हम कहूचे एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस टेक्निकल एफिशिएंसी कहले हमें कोन बुझिबा ना हमें आ परे आलोचना करिबा टेक्निकल एफिशिएंसी हमहु जो प्रोडक्शन फंक्शन दिया हेछि ताले सीए दक्ष भाव रे प्रतिपादित हेइथिबा दरकार एवं एलोकेशन हमर जो संबल रहिला रिसोर्सेस रहिला तार मध्य दक्ष रूपे आवंटन किबा बंटन करा जायथिबा उचित ताहले जाई कि पैरेटो एफिशिएंसी अचीव करि परिबा प्राप्त करि परिबा टू एन्श्योर ओवरऑल पैरेटो ऑप्टिमैलिटी एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन नीड्स टू बी टाइड अप विथ इंडिविजुअल प्रेफरेंस ताले ए जो जिंसटी रहला एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन नीड्स टू बी टाइड अप विथ इंडिविजुअल प्रेफरेंस ताले इंडिविजुअल प्रेफरेंस कोन always an individual or a consumer would like or prefer more utility in place of another or that is you can say he prefers to derive more utility or that commodity bundle which provides him maximum utility or maximum satisfaction tale एटा कोन देखिबा एठी हम करिबा ना efficiency in production needs to be tied up with individual preference तले प्रोडक्शन उत्पादन दक्षता केते बेले हबो ना हमें एपरि भाव रे उत्पादन करिया उचित जहा कि सबुठू अधिक संतुष्टि प्रदान करिवो काहाकू गोटे इंडिविजुअल को जणे लोक को और कंज्यूमर को व्यवहारकारी की से सबुठू अधिक संतुष्टि प्रदान करिवो ताले सेटा को हमें कहबा एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ताले प्रोडक्टिव एफिशिएंसी गोटे टेक्निकल एफिशिएंट गोटे एई जिंस दिटा को हम वर्तमान देखिबा एन इकोनॉमी इज एफिशिएंट इन प्रोडक्शन इफ इट इज ऑन इट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ताले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व जोटे ताले एठी कोन एई कर्व माध्यम रे आमे एई रेखा माध्यम रे आमे हम अर्थनीति रे किपरि भाव रे हमर संबल गुडी को विनियोग करा जाउ अछि कि किपरि भाव रे हमर संबल गुडी को आमे नियोजित करि पाउचे आमे ता पर्यालोचना करूचे जानि पाउचे अकॉर्डिंग टू पैरेटो ताले पैरेटो को मतरे एन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस इज एफिशिएंट इन प्रोडक्शन और टेक्निकली एफिशिएंट इफ नो further reallocation would permit more of one good to be produced without necessarily reducing the output of some other good मने करा जाऊ आमे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी
कर्व उपरे कि फ्रंटियर उपरे आमे रिसोर्स एलोकेशन करछे कि आमे गोटे उत्पादन करूचे एतिकी अमाउंट रो उत्पादन आमे करूचे दीटा कमोडिटी रो दीटा द्रव्य ताले जदि आमे गोटिए उत्पाद को बढ़ाइया को चाहिबा ताले निश्चित भाव में आमे कौन करिबा ना आउ गोटिए द्रव्यर उत्पाद को आमको कमेवा को पड़िबो एवं से जेतिकी उत्पाद आमे कम कले से उत्पाद रे लागुथिबा संबल को आमे कौन करिबा विनियोग करि परिबा आउ गोटिए अधिक अन्य उत्पाद को प्रोडक्शन करिया पय उत्पादन करिया पय ताले आमे देखिया एठी कोन एटा होची आमु कहया पैरेटो एफिशिएंसी बोली आमे कहया दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग फिगर ताले आमे निम्नोक्त चित्र रे आमे वर्तमान देखिया ताले पिले वर्तमान ए चित्रटी को भलो भाव रे निरीक्षण कर एटा हला ओ एक्स एक्सिस देखो जोथरे एरो मार्क टी जाउची दिस इज योर ओ एक्स एक्सिस व्हिच मेजर द प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज वर्टिकल एक्सिस कौन करूची ना वर्टिकल एक्सिस मेजर्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यू जस्ट ऑब्जर्व हियर दिस इज ए कर्व कॉनकेव कर्व टी एक रेखाटी को हमें कौन कहूचे दिस इज नोन एज योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ओवर द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व A and B combination of goods and services are present ताले that is कौन ना A and B combination of goods and services are efficiently produced ताले जदि if we think of a combination of goods and service then how much unit of service is produced 22 units of service is produced and 15 units of goods are produced ताले वर्तमान this is the efficient combination of goods and services production ताले if now we desire to produce at B point on production possibility frontier then we have to increase how much amount 3 units of services to increase 3 units of services we have to forego the production of kete unit 4 unit of goods ताले that means ए चारोटी यूनिट और चारोटी द्रव्य ऊपर जेतिकी रिसोर्सेस आमे खर्च करथिले संबळ आमे नियोजन करथिले सेही रिसोर्स माध्यम रे आमे तीनोटी अधिक सर्विस तयारी करि परिबा ताले आमे कहया कोन एठी हम कहले आमे धर मने करा जाऊ एतिकी यूनिट ए आरो देखो ए गैप टी एतिकी यूनिट अधिक सर्विस तयारी करिया पई सी वर्तमान कोन करूची एतिकी यूनिट 15 रु 11 पर्यंत छाडी दउची 4 यूनिट वर्तमान कोन कहूची छाडी दउची कम करूची प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ताले दैट इज कोन ना इट इज ऑब्वियस अकॉर्डिंग टू पैरेटो दिस इज ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस goods and services or it is you can say product efficiency achieved here now consider C point tale C is lying below the concave curve or below the production possibility frontier tale here if you desire to increase the production of service tale there is not necessarily implied to reduce the production of goods tale along this line you can increase the production without decreasing the production of goods you can increase the production of services without decreasing the production of goods tale it is not efficient allocation kintu we can say that also at below point 8 suppose resources are allocated so that production are inefficient that is production occurs at a point that is at point C inside the production possibility frontier this implies it is possible to produce more of at least one good and no less of anything else ताले आमे आकू अलगा कम न करी गोटे द्रव्य आ गोटे द्रव्य को उत्पादन करि परबा ताले कोन आमे देरु पाइले A and B lie on the production possibility curve जो विषय मु वर्तमान आलोचना कली देखो A और B are lying कोडी on production possibility curve ताले which is productively efficient or efficient production is achieved over this point it is impossible to produce more goods without producing services
ताले गोटे गुड़ को कम न कले आउ गोटे गुड़ एई पॉइंट दिए आमे करि परिबा नै जेमि मु वर्तन कहली बी पॉइंट रे जदि आमे प्रोडक्शन करिबा ताले आमे कोन करिबा ना सम अमाउंट ऑफ गुड्स वी विल रिड्यूस टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ गुड बी इट इज इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स विदाउट प्रोड्यूसिंग सर्विसेज ताले गोटे आमे नैचे गोटे एक्सिस रे नैचे एट देखो गोटे एक्सिस रे नैचे सर्विस गोटे एक्सिस रे नैचे गुड्स जदि गुड्स रो सर्विस रो प्रोडक्शन हमें बढ़ेबा ताले गुड्स रो प्रोडक्शन को कमेबा जदि गुड्स रो प्रोडक्शन हमें बढ़ेबा ताले सर्विस रो प्रोडक्शन हमें कमेबा hence inefficiency in production is also inefficiency ताले movements along production possibility frontier reflect technically efficient nature of all the allocation of frontier ताले production possibility curve ऊपर जेते गुडी allocation रहिला कोन दे आर टेक्निकली एफिशिएंट ताले आमे देखिया वर्तमान टेक्निकल एफिशिएंसी यांत्रिक दक्षता को आमे कोन नबा कि जो आमे प्रोडक्शन फंक्शन आमे ये करछे ताकू आमे टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बोली आख्या दोचे आमे व्हाट वी कैन डिस्कस अबाउट द टेक्निकल एफिशिएंसी इज द एफिशिएंसी effectiveness with which a given set of inputs is used to produce an output ताले हमर जो रिसोर्सेस रहला गिवन सेट ऑफ इनपुट्स ताले धर माने कर कैपिटल एंड लेबर रहला इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एन आउटपुट गोटे द्रव्य तैयारी करिया पई हमें टेक्निकल इफेक्टिवनेस कोन आमे सेति देखिबा thus a farm is said to be technically efficient if she is produce the maximum output from the minimum quantity of inputs ताले जेते बेले आमे गोटे फार्म को केते बेले कहबा टेक्निकल एफिशिएंसी जे अचीव्ड बाय दैट फार्म ना जेते बेले गोटे फार्म मिनिमम रिसोर्सेस संबल को नियोजित करी जेते बेले सबुठारु अधिका उत्पादन करि पारिया को सक्षम होइताय ताकू आमे कहबा कोन टेक्निकल एफिशिएंसी जे अचीव्ड बोली आमे कहबा आर टेक्निकली एफिशिएंट बोली कहबा ताले सच एज लेबर एंड कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी ताले ई रिसोर्स को लेबर कैपिटल टेक्नोलॉजी आकु कम यूज करिकरी सबुठारु अधिक द्रव्य जेतले उत्पादन करिबा ताकू आमे कोन कहबा टेक्निकल एफिशिएंसी होला बोली कहबा ताले टेक्निकल एफिशिएंसी इज दस द प्री कंडीशन ऑफ ओवरऑल पैरेटो एफिशिएंसी ताले पैरेटो एफिशिएंसी विल अचीव्ड when the Pareto efficiency will be achieved na ketebele na when both production efficiency and technical efficiency or allocation efficiency and technical efficiency will be achieved. These are the two preconditions of the overall Pareto efficiency. It देखिबा efficient allocation of resources among farms ताले हमर जेते गुडी फार्म रहिले ताले सेही फार्म माने उत्पादनकारी जे रहिले फार्म गुडी का कारखाना गुडी का रहिला ता देरे रिसोर्स शुड बी ता देरे एफिशिएंट एलोकेशन केमिति हेई पाउची हमें ताको वर्तमाने आलोचना करबा त लेट अस हैव ए डिस्कशन अबाउट हाउ द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस इज टेकन प्लेस अमंग द फार्म्स ताले फर्स्ट रिसोर्सेस शुड बी allocated to those farms where they can be most efficiently utilized or used ताले जेते बेले आमे हमर स्वल्प संबल को बंटन करिबा कि आवंटन करिबा कोठी ना कारखाना मानक मध्य रे उद्योगी मानक मध्य रे ताले कोन हबो ना इट शुड बी allocated to those farms where they can be most efficiently used ताले को फार्म को आमे allocate करिबा ना जो फार्म माने उत्पादनकारी माने ताकू ठीक भाबरे सठिक भाबरे दक्ष भाबरे ताकू नियोजित करि परिबे और परिचालना करि परिबे ताले द कंडीशन फॉर एफिशिएंट एलोकेशन इज दैट मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ एनी रिसोर्स ताले मु आगुरु आमे आलोचना करिचे मु आगुरु मध्य तुम मानन को कहिची मार्जिनल प्रोडक्ट आमे काहू कहूचे सीमांत उत्पाद आमे काहू कहूचे और प्रांतीय उत्पाद आमे काहू कहूचे ना दैट इज that a unit of labor produce ताले गोटे लेबर और any resource is able to produce ताले आमे जेते बेले गोटे रिसोर्स अधिक रिसोर्स नियोजित करिबा जेति की टोटल प्रोडक्ट रे अधिका हेबो से अधिका अमाउंट रो प्रोडक्ट की उत्पाद को आमे मार्जिनल प्रोडक्ट बोली कहबा
ताले से कौन कहला ना द कंडीशन फॉर एफिशिएंट allocation when the efficient allocation will be taken place केतेबेले it will be achieved ना when the marginal physical product of any resource in production of a particular good is the same no matter with farm produces that good ताले that means आर अर्थ कौन जेते गुडी फार्म रहिले समंतंगर मार्जिनल प्रोडक्ट कौन हबो रिसोर्स मानकर मार्जिनल प्रोडक्ट का तापरे हमें देखिबा नेक्स्ट पॉइंट को आसीबा द एडिशनल कंडीशन फॉर सच एफिशिएंसी इज दैट द रेट्स ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन हमें का कोचे ना ओवर एन आइसोक्वांट दैट द रेट एट व्हिच वन रिसोर्स इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर जो हार रे गोटे रिसोर्स बदल रे आमे अन्य गोटे रिसोर्स को बंटन करछे कि नियोजित करूछे among inputs must be the same in the production of each good if production is to be on the production possibility frontier ताले production possibility frontier उपरे जदि we measure the rate of technical substitution that must be same ताले से गुडी का समान हेबो ताले दिस इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर आमे देखिबा निम्नलिखित फिगर रे आमे चित्र पर स्लाइड जो अछि एई चित्र विषय रे आलोचना करिबा ताले द फॉलोइंग फिगर शोज टेक्निकली एफिशिएंट वेज ऑफ allocate द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ k एंड l द प्रोडक्शन ऑफ टू आउटपुट्स between the productions of two outputs ताले दीटा आउटपुट प्रोड्यूस करिबा भितरे आमे k आ l कैपिटल L रिप्रेजेंट्स लेबर आमे केमिति किपरि भाबरे बंटन करछ ताले बर्तमान ऑब्जर्व करे एटी फिगर रे किछि पॉइंट छाडी एटा P1 एटा P2 एटा P3 एटा P4 ताले देखा ए गोटे बॉक्स लेफ्ट हैंड कॉर्नर रे इट इज ओरिजिन ऑफ x इज द गुड x गुड एटा राइट हैंड कॉर्नर इज द ओरिजिन ऑफ y गुड ताले along this axis we are measuring labor along vertical axis we are measure capital एकड़े भी हमें कैपिटल मेजर करछे एकड़े हमें कौन करछे लेबर मेजर करछे ताले बर्तन देखिबा हां ताले द लाइन जॉइनिंग OX and OY is the locus of these efficient points along this line points along this line RTS rate of technical substitution of labor for capital in the production of goods is equal to the RTS in the production of goods of Y ताले बर्तन देखा जेते बेले एटा कोन दिस इज द आइसोक्वांट एटा x1 x2 एटा x रो आइसोक्वांट 1 आइसोक्वांट 2 आइसोक्वांट 3 आइसोक्वांट 4 एटा y रो आइसोक्वांट 1 आइसोक्वांट 2 आइसोक्वांट 3 आइसोक्वांट 4 ऑल आर कन्वेक्स टू ओरिजिन ताले y गुड रो ओरिजिन की हैला एटा OY x गुड रो ओरिजिन के हैला दिस पॉइंट ताले ए जो लाइन टी जॉइन करिछि OX आ OY की ताले आ ऊपर जेते पॉइंट रहिला ताले सब जगह रे एफिशिएंट एलोकेशन हेबो ताले हम बटन देखिबा कोन ना एट कहला एफिशिएंट पॉइंट्स ताले along this line rate of technical substitution in the production of good X is equal to the rate of technical substitution in the production Y काहे की ना देखा ए पॉइंट रे ए आर स्लोप कोन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ Y for X आर रेट ऑफ टेक्निकल ए कर्व रो x1 कर्व रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन X for Y ताले एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एटा गोटे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी x आ y रो एटा गोटे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी x y y रो एटा गोटे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ताले ए पॉइंट रे रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ बोथ द गुड विल बी इक्वल ताले बर्तन देखा एटी नेक्स्ट कोन कहला अच्छा OX is the origin for measuring capital and labor devoted to the production of good X and OY represents the origin for resources devoted to Y ताले OX कहार origin ना X गुड को प्रोडक्शन करिया पई OY कार origin Y गुड को प्रोडक्शन करिया पई ताले को रहिला हमर रिसोर्सेस कोन रहिला कैपिटल एंड लेबर ताले along these axis we are measuring the devotion or allocation of
capital and labor for the production of X and Y. ताल बर्तमान ए एक्सिस रे वर्टिकल एक्सिस रे हमें कैपिटल मेजर करछे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस रे हमें लेबर मेजर करछे। ताल जीवा नेक्स्ट पॉइंट रे हम देखिया कोन इट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द अबव फिगर दैट एनी पॉइंट अदर देन द टेंजेंसी पॉइंट बिटवीन द आइसोपॉइंट्स विल इंटरसेक्ट। ताले एटा को P1 नियो, एटा को P2 नियो, एटा को P3 नियो, एटा को P4 नो। ताले ए पॉइंट गुडी करे both the isopoint are tangent to each other, but any other point other than these कौन ना both the isopoint will intersect like in A। ताले एटा को जदि एठी एक्सटेंड करिवा, एटा को जदि फर्दर हम एकड़ को एक्सटेंड करिवा, ताले A पॉइंट रे both the curve will intersect each other। बुझिएला? ताले बर्तन देखिवा tangency of isopoints for good X and good Y implies that their slopes are equal। ताले मुई वर्तमान आगुरु कहउथिली एई जो पॉइंट गुडी करे both the isopoints are tangent to each other, ताले not intersecting, they are tangent touch करछन। ताले जो tangency point जेतोल टच करछनी both the curve the slope are equal। that is the rate of technical substitution of capital for labor is equal in X and Y production। ताले एई जगह रे कोन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन माने रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन हमें का कहउचे ना गोटिए रिसोर्स पई आउ गोटे रिसोर्स गोटे फैक्टर पई हमें आउ गोटे फैक्टर को केते हार रे परिवर्तन करूचे, केते हार रे नियोग करूचे। ताले एई पॉइंट गुडी का विषय हम जानले बर्तमान एई पॉइंट गुडी करे कोन हैला ना रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन सब जगह रे समान हैला। अच्छा फर्दर पॉइंट को आसिया द कर्व जॉइनिंग OX and OY that includes all these points of tangency therefore shows all of the efficient allocations of capital and labor। ताले वर्तमान हमें आर कंक्लूजन ड्रॉ कले कोन ना एई पॉइंट गुडी करे rate of technical substitution of labor to capital and capital to labor are equal। ताले सेहिति पई हमें कहबा कोन ना at these points the allocation of resources are efficient। efficiency in output mix कहले कोन X और Y, X गोटे गुड Y गोटे गुड, ताले आउटपुट मिक्स बोले X और Y रो समाहार को हमें नबा, X और Y एकाथरे करे हमें नबा। टेक्निकल एफिशिएंसी will not necessarily ensure overall Pareto optimality unless the individual's preference are tied up with the production possibilities। ताले जे पर्यंत until and unless the individual's preference are tied up with the production possibilities, that means जेतेबेले it will not satisfy the production possibilities, then we can say it is not Pareto overall Pareto efficiency बोली कहि परिबा नै। ताले कोन ना the necessary condition to ensure the Pareto optimum product mix is that goods produced with technical efficient allocation of resources are those which are most demanded by the consumer। ताले जो द्रव्य गुडी को हमें टेक्निकली एफिशिएंट allocation of resources माध्यम रे हमें कोन करछे द्रव्य प्रस्तुत करछे, ताले that must be demanded maximum। ताले the people will demand or the consumers will demand or that will be demanded by the consumers in maximum। ताले देखिबा नेक्स्ट फिगर रे हम देखिबा पड़िबा technically this condition could be achieved when marginal rate of substitution। ताले एटा कोन कहबा MRS होची marginal rate of commodity substitution। ताले गोटिए द्रव्य बदल रे को हार रे गोटिए द्रव्य बदल रे हमें आउ गोटे द्रव्य को कंज्यूम करूचे for any two goods by consumers is equal to the rate of product transformation of these two goods। ताले RPT कोन रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ताले गोटे द्रव्य को आउटपुट को हमें आउ गोटे आउटपुट को प्रतिबदल करूचे जोटा को हारे रे हमें ताको परिवर्तन करूचे। सेमती रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को हारे रे हमें द रेट द कंज्यूमर आर सब्स्टिट्यूटिंग
and एटा को producers are substituting product transformation of two goods ताले जोठी कोन हला equal हबो सेही जगह रे this condition will be satisfied ताले देखो एटा कोन ना this is your production possibility curve PP is your production possibility curve U1 U2 U3 are your utility curve or indifference curve ताले U1 gives less utility than U2 and U2 gives less utility than U3 ताले एटी गोटे चिंता कर पॉइंट E ताले E पॉइंट रे U2 कर्व इज टेंजेंट टू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ताले एटी कोन हला ताले एई जगह रे द स्लोप ऑफ U2 कोन ना रेट ऑफ कमोडिटी सब्स्टिट्यूशन और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू कोन हे गला रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ताले आ ऊपर हमें कोन आर स्लोप को हमें कोन कहूचे रेट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंडिफरेंस कर्व और यूटिलिटी कर्व रा स्लोप को हमें कोन कहूचे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ताले जो जगह रे दीटा जगह इक्वल है किए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड दैट रेट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन then the efficiency will in production will be achieved here ताले एई जगह रे हमें कहया कोन हमर ऑप्टिमल एफिशिएंसी और ऑप्टिमल सैटिस्फैक्शन वी डिराइव ताले एटी टिके देखो से कोन कहला टेक्निकली this condition could be achieved when the marginal rate of substitution for any two goods by consumers is equal to the rate of product transformation of these two goods ताले जो दुईटी गुड X गुड Y ताले एई एक्सिस रे आमी सीए कंज्यूम करछि इंडिफरेंस एक्सिस रे एई कर्व ऊपर इंडिफरेंस कर्व ऊपर ए कंज्यूमर कंज्यूम्स एंड ए पीपी कर्व ऊपर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऊपर फार्म प्रोड्यूस ताले एई पॉइंट रे कोन ना एनी टेंजेंट ड्रॉन टू दिस कर्व shows rate of product transformation any tangent drawn at this position shows that rate marginal rate of substitution ताले एटी जदि हम गोटे टेंजेंट टाणीबा ताले both the curve utility curve and production possibility curve are tangent to each other ताले therefore rate of product transformation is equal to the marginal rate of substitution ताले this is कोन optimum allocation बोली हमें कहि परिबा and efficiency in output mix बोली हमें कहि परिबा ताले the combinations of X and Y that can be produced are given by the production possibility frontier PP ताले PP ऊपरे कोन कला combination of good X and Y will be given and any point on PP represents a point of technical efficiency ताले आगु हमें आलोचना करिचे that any point lying over PP production possibility curve that is technically efficient next jiva now the individuals indifference map is superimposed and observed that ei jo mu bartan tam sangere आलोचना कली at point E कोन ना एटा गोटे इंडिफरेंस मैप U1 U2 U3 of different utility हैला ताले it is simple superimposed ता ऊपरे हमें ताकू रखिले ताले कोन हैला and observe that at point E on PP provides maximum utility ताले को पॉइंट रे से मैक्सिमम यूटिलिटी देला एई पॉइंट रे मैक्सिमम काहे ना आप परे आउ से तयारी करि परिबनी द्रव्य कारण एफिशिएंट प्रोडक्शन ओनली आर ऊपर हबो आगु को बियॉन्ड दिस कर्व प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दैट द प्रोड्यूसर कैन नॉट गो likewise the consumer will not consume or individual will not demand the commodities over U1 and this will provide lower satisfaction than that of U2 as U2 is your higher indifference curve tale higher indifference curve always provide higher level of satisfaction tale this is the point where that the consumer will derive maximum satisfaction and the producer will produce maximum output applying the resources this is you can say efficient allocation of resources and efficient output mix will be achieved at this point देखो at this point of tangency the individual's MRS XY is equal to the technical RPT XY hence this is the required condition for overall efficiency
ताले both the efficiency, product efficiency and technical efficiency will achieved at this point. तापर next कौन कहला, in a single person economy the core PP represents those combinations of X and Y that can be produced and every point on PP is efficient in production sense. ताले बर्तमान जदि गोटे सिंगल लोक प्रोड्यूस कला ताले एटा कोन any point over this the producer will produce that will be product efficiency will be achieved over this curve जोटा कि मु आगर वर्तमान आलोचना करथि. However, only the output combination at point E is a true utility maximum for the individual. Then similarly, since it is E is lying on a higher indifference curve than that of U1, then it will give or provide maximum utility to the consumer or the individual. The at point E, individual MRS is equal to the rate at which X can technically be traded for Y, RTP. Tale rate of product transformation or transformation of a product, RTP. तापर जिबा हमें efficiency in a perfectly competitive market. ताले गोटे पूर्ण संतुलित बाजार रे किपरि भाव रे दक्षता और दक्ष allocation हेई पारुची आमे वर्तमान आलोचना करिबा. ताले मने कर जाऊ there are two types of efficiency such as productive efficiency and allocative efficiency. ताले दी प्रकार efficiency के आमे वर्तमान आलोचना रा परिसरभुक्त करिबा. ताले गोटे हैला productive efficiency आ गोटे हैला allocative. आमे जते बेले संबल को आवंटन करूचे ताले this shows or throws light on allocative efficiency. And जेतेबेले about we are discussing about the product of two goods, then it tells about the product's productive efficiency. Productive efficiency means what is the meaning of a productive efficiency? Now doing things right, ठीक जिनिस करिबा, while allocative efficiency means doing the right things. Same thing कोची ताले गोटे ठीक जिनिस तयारी करिबा and गोटे ठीक जिनिस को चूज करिबा, थिंग्स राइट, डूइंग थिंग्स राइट, डूइंग द राइट थिंग्स. ताले आ भीतर डिफरेंस टा एक थिंग्स राइट, राइट थिंग्स. ताले जो द्रव्य को तयारी करिबा से ठीक हेतिबा दरकार एवं आमे कोन करिबा गोटे ठीक द्रव्य को तयारी करिबा. ठीक द्रव्य ठीक होइतिबा दरकार, ठीक द्रव्य होइतिबा दरकार. आर भीतर जो पार्थक्य एटा होची पार्थक्य का भीतर ना प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एंड एलोकेटिव एफिशिएंसी भीतर. A farm is productively efficient when total use of resources results in the lowest possible cost per unit of output. आमे तले प्रोडक्टिवली एफिशिएंट केते बेले हे परियो, प्रोडक्ट एफिशिएंट केते बेले अचीव करियो ना जेते बेले समस्त संबल रा को विनियोग कला परे आमे गोटे जो द्रव्य उत्पादन करिवा तार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हेतिबा दरकार, लोएस्ट पॉसिबल होबा दरकार, सबुटु कम हेतिबा दरकार. ताले दिस शुड बी द पॉइंट वेयर एवरेज टोटल कॉस्ट इज मिनिमम. ताले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ता आमे मेजर करछे को परे एवरेज कॉस्ट ऑफ हाराहारी परिव्यय रेखा ऊपर. ताले सेही जगह रे टोटल कॉस्ट इज मिनिमम, एवरेज टोटल कॉस्ट इज मिनिमम. ताले हाराहारी समुदाय परिव्यय निम्न सर्वनिम्न हेतिबा दरकार. ताले the definition of allocative efficiency is that individual farm is producing the correct quantity to the right goods, that doing the right things. ताले allocative efficiency definition हमें कौन जाले doing the right things, ठीक जिनिस हमें तैयारी करिया दरकार. ताले केमिति करिया, this implies that the last unit produced cost ताले तार से धर से 10 यूनिट तैयारी कला ताले 10th यूनिट करिया पई तार जो कॉस्ट आसला दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट. एक्जेक्टली व्हाट द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, दैट इज द प्राइस पर यूनिट. ताले दैट मींस कोन ना प्राइस पर यूनिट, गोटे यूनिट पे से सेति की प्राइस पैसा दबा को प्रस्तुत, मूल्य दबा को प्रस्तुत अछि. रिसोर्सेस हैव बीन ऑप्टिमली एलोकेटेड. ताले जदी एई कंडीशन सैटिस्फाई कला
ताले कौन करिबा आमे कहबा दैट द रिसोर्सेस हैव बीन ऑप्टिमली एलोकेटेड ताले संबल गुड़िक ठीक भाव में सुचारू रूपे ऑप्टिमली सर्वाधिक भाव कौन है आवंटन करा जायछि ताले दिस क्राइटेरियन इज अचीव्ड व्हेन प्राइस एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस ताले प्राइस मस्ट बी इक्वल टू दैट इज योर मार्जिनल कॉस्ट फॉर द फार्म ताले फार्म रो मार्जिनल कॉस्ट गोटे द्रव्य को उत्पादन करिया पई जेति से कॉस्ट विनियोग करूची ताहा द्रव्यर मूल्य सहित समान होइतबा दरकार ताले दी a perfectly competitive farm will be both productively and allocatively efficient in the long run ताले देन आमे देखिया वर्तमान एठी ताले we can discuss this with the help of these figures ताले एठी देखो एटा हला गोटे मार्केट रे D is the demand curve, S is the supply curve. ताले वर्तमान supply and demand curve are interacting each other at point कोठी ए पॉइंट रे ए जो क्रॉस राउंड अछि सेही पॉइंट रे and it determines equilibrium price P. ताले this is your average revenue and marginal revenue. ताले this price perfectly competitively जेतु this price will be taken by the farm. कारण farm is a price taker in a perfectly competitive market. ताले P price is taken by the farm from the market. ताले price line or demand curve or average revenue curve or marginal revenue curve are horizontal and will coincide with each other. ताले आमे जानिचे under perfect competition average revenue is equal to marginal revenue. ताले along this curve average revenue is equal to marginal revenue is equal marginal revenue which is equal to demand. ताले बर्तन देखा AC is your average cost curve. MC will intersect the average cost curve at its minimum point. ताले A point रे MC is equal to MR. ताले equilibrium को जगह रहला. ताले at this point the equilibrium. ताले the production will be taken place को जगह रे. At the minimum point of average cost. ताले there will be कौन ना normal profit. ताले productive efficiency will achieved here. ताले को जगह रे ना when the producer will produce at the minimum point of average cost curve ताले एटा को हमें कहबा कोन दिस इज योर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम बोली हमें कहूचे इन ए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट काहे कि ना अंडर परफेक्ट कंपटीशन all the firms present in the market will earn only normal profit ताले normal profit will be achieved here where price line or average revenue curve or demand curve is tangent to the minimum point of the average cost curve. Next आसा देखिबा ताले आमे आदेरु कोन कंक्लूड कले कंक्लूजन कोन कले ना the PC perfect competitive firm in the long run produces at an output level where price is equal to minimum AC which is equal to MC which is equal to MR which is equal to AC ताले average cost marginal cost marginal revenue and price average revenue are equal at the minimum point of average cost ताले this identity fulfills the criteria for both productive and allocative efficiency in the long run ताले productive efficiency केते बेले हबो ना जेते बेले when average revenue would be equal to minimum of averages ताले minimum averages सहित जेते बेले average revenue समान हबो सेते बेले productive efficiency उत्पादकतार दक्षता प्राप्त हेबो एवं allocative बंटन करियर दक्षता केते बेले आसीबो ना जेते बेले एवरेज रेवेन्यू और प्राइस वुड बी इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट जेते बेले एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट सहित समान हो कि प्राइस मार्जिनल कॉस्ट सहित समान है तापर दिबा कोन एफिशिएंसी इन ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इकोनॉमी ताले गोटे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इकोनॉमी रे दक्षता प्राप्त केते बेले हो ताले दक्षता को सेंस रे ना allocative efficiency productive efficiency केते बेला हवा हम देखिया ता लेट इन ए सिंप्लिफाइड कॉम्पिटिटिव मार्केट इकोनॉमी वेयर ऑल इंडिविजुअल्स आर आइडेंटिकल एंड एंगेज इन ग्रोइंग फूड ताले किछि फार्म ऑल आर आइडेंटिकल मने करो गोटे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट रे हमें कहूचे ऑल द फार्म्स प्रेजेंट प्रोड्यूस होमोजेनस प्रोडक्ट ताले
they are producing homogeneous product बोली आमे कहबा, that is identical and engaged in growing food, ताले से माने खाद्य उत्पादन करिवार करूछन. Further it is assumed that कौन ना as per law of diminishing return extra minute of work on fixed land brings less and less extra food. ताले आमे भी जानि छे diminishing marginal law of diminishing marginal return कौन हुए, diminishing return कौन हुए ना marginal return diminishes. ताले marginal return हम क्या कहया ना marginal product will diminish. ताले as you go on increasing the labor hour to a fixed amount of land the marginal return will diminish or marginal product will diminish. तापरे सेकंड रे कोन कहूची each extra unit of food consumed brings diminishing marginal utility. ताले तमे भी जानि छ आमे जतले कंज्यूमर बिहेवियर आलोचना करथिले सेतेबेले आमे जानिथिले कोन ना जेतेबेले गोटे कंज्यूमर उपभोक्ता जेतेबेले अधिक रु अधिक कंजम्पशन करिवो उपभोग करिवो तार मार्जिनल यूटिलिटी कौन हबो, प्रांतीय संतुष्टि कौन हबो और सीमांत संतुष्टि कौन हबो, दैट विल गो ऑन फॉलिंग. ताले दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड विथ द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फिगर. देखो ए फिगर टी भलो भाबे देखो. एई जो कर्व टी जाय छै हमें एठी नो छै क्वांटिटी, एठी नो छै मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. ताले बर्तन देखो ए जो एमसी एसएस एटा गोटे अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, ए जो बेंड कर्व स्टेप टाइप कर्व जो है इट इज अपवर्ड स्लोपिंग, इट इज योर डिमांड कर्व, दैट इज कौन नोन एज अदरवाइज मार्जिनल यूटिलिटी कर्व. ताले बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ई. ताले ए कर्व इज द सप्लाई कर्व, बी कर्व इज द डिमांड कर्व. ताले सप्लाई कर्व रिप्रेजेंट मार्जिनल कॉस्ट and demand curve represent marginal utility curve. ताले एठी देखो हमें कौन लिखिचे कि कौन हमें आलोचना परिसरभुक्त करिबा. SS and DD are supply and demand curve of the competitive economy. ताले गोटे competitive economy रे supply curve और demand curve विषय रे हमें जानिले. MC curve slopes upward and MU curve slopes downward. ताले जेहेतु marginal utility diminish करूची ताले marginal utility curve will slope downward and जेहेतु मार्जिनल कॉस्ट जेते हम अधिक अधिक तैयारी करिया मार्जिनल कॉस्ट बढ़िबो ताले इट विल स्लोप अपवर्ड. ताले एमसी कर्व इज द इंडस्ट्री सप्लाई कर्व, ताले एसएस कर्व होची इंडस्ट्री रो सप्लाई कर्व एंड एमयू कर्व होची इंडस्ट्री रो डिमांड कर्व. ताले बोथ विल इंटरसेक्ट एट को पॉइंट रे ना एट पॉइंट ई. ताले वेयर दे डिटरमाइन द मार्केट प्राइस. This is clear from the above explanation that each person will be working up to the critical point where the declining marginal utility of consuming food curve intersect the rising marginal cost of growing food curve. ताले SS curve और DD curve DD curve will intersect at point E. सही पर्यंत सी कौन करिवो that each person will work up to that point. ताले एबे देखिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक सरप्लस कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस. इकोनॉमिक सरप्लस होची कोन द एरिया बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड कर्व्स एट द इक्विलिब्रियम. ताले इक्विलिब्रियम पॉइंट रे जेति के एरिया रहला सप्लाई और डिमांड कर्व भितरे ताको हमें कहूचे कोन इकोनॉमिक सरप्लस उद्बृत्त अर्थनीतिक उद्बृत्त बोली हमें कहूचे. इकोनॉमिक सरप्लस इज द सम ऑफ द कंज्यूमर उपभोक्ता उद्बृत्त एवं उपभोक्ता सम टोटल ऑफ द उपभोक्ता कंज्यूमर सरप्लस. ताले व्हिच इज द एरिया बिटवीन द डिमांड कर्व एंड द प्राइस लाइन. ताले प्राइस लाइन और डिमांड कर्व भीतर जो एरिया रहला ताको हमें कहया कोन कंज्यूमर सरप्लस. ताले कंज्यूमर सरप्लस रो सम टोटल होची इकोनॉमिक सरप्लस. प्रोड्यूसर सरप्लस का कहबा ना इज द एरिया बिटवीन द प्राइस लाइन एंड एसएस कर्व. सप्लाई कर्व और प्राइस लाइन भीतर जो एरिया टी रहला ताको हमें कहया कोन प्रोड्यूसर सरप्लस. ताले प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्लूड्स रेंट प्रॉफिट and farms and profits to farm and owners of the specified inputs of the industry. ताले रेंट और प्रॉफिट को इंक्लूड करूछ. ताले कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम मैक्सिमाइज द इकोनॉमिक सरप्लस available to that industry which is economically efficient. Competitive equilibrium maximize the economic surplus. ताले economic surplus कौन that is the sum total of the consumer surplus.
ताले जो जगह कंज्यूमर सरप्लस मैक्सिमम हबो ताले सेटी कोन हबो ना कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम विल बी अचीव ताले दैट मींस industry or this implies or this says the industry is economically efficient तेणु आमे कहया कोन ना that is feasible allocation of resources को पर्यंत हबो ना that is at the point of e point जो point a point पर्यंत हबो a point पर्यंत e point पर्यंत तापर देखिया at the equilibrium point कोन कोन आमे देखिया ना p is equal to mu price is equal to marginal utility price is equal to marginal cost ताले putting these two equation together we see that marginal ताले p is equal to mu p is equal to mc therefore mc is equal to mu ताले this means that the utils gained from the last unit of food consumed exactly equals to the leisure utils ताले leisure से जति की अवकाशन होची तार util सहित समान हो marginal utility ताले lost from the time needed to produce that last unit of food ताले लास्ट यूनिट ऑफ फूड तैयारी करिया पे से जो ख्यांत होउची ताले ताहा मार्जिनल यूटिलिटी सहित समान ताले the above result will not be changed even if model is extended to any number of commodities ताले whatever may be the number of commodities ताले this condition will not be or this criteria will not be changed ताले competitive prices and efficiency the first fundamental theorem of welfare economics कौन ना कल्याणकारी अर्थनीति ताले बर्तन देखिबा कल्याणकारी अर्थनीति रे कोन हेई थाए ना द रिलेशनशिप बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस आर आज फॉलोज ताले गोटे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट रे कोन हेइथिबो ना एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस केमिति हेइथिबो का सहित ना गोटे परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट रे फर्स्ट attaining a Pareto efficient allocation of resources requires that marginal rate of technical substitution for all producers and marginal rate of substitution for all consumers should be equal. आमे वर्तमान एहर जस्ट टिके पूर्वरु आमे एई विषय आलोचना करतले जोटी की एई देखो एई फिगर रे देखो दिस इज योर इंडिफरेंस कर्व दिस इज योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दे आर टेंजेंट टू ईच अदर एट पॉइंट ई वेयर this is your slope that is equal to price ratio slope of the price line is equal to कोन ratio of their prices ताले एई जगह रे rate of commodity substitution is equal to rate of product rpt rate of product slope of the production possibility curve is equal to slope of indifference curve ताले वर्तमान टिके पळे आस ताले at the point of tangency mrts of xy is equal to mrssy is equal to ratio of their prices 80 स्लोप कार ना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व 80 स्लोप कार ना 80 इंडिफरेंस कर्व और यूटिलिटी कर्व 80 स्लोप कार ना दैट इज प्राइस लाइन ताले एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी देखो ए जो कर्व रे ए पॉइंट रे ताले सबु जंकर स्लोप इज इक्वल टू सेम समान हेथि ताले दैट मींस दिस प्रोवाइड द कॉमन रेट ऑफ ट्रेड ऑफ ताले तांका भीतर गोटे बंधन आसिला कोन ना टू व्हिच ऑल एजेंट्स विल एडजस्ट ताले एट दिस पॉइंट ऑल एजेंट्स विल एडजस्ट टू देमसेल्व्स ताले आज ऑल एजेंट्स फेस द सेम प्राइसेस इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट ऑल ट्रेड ऑफ रेट्स विल बी इक्वलाइज्ड एंड एन एफिशिएंट एलोकेशन विल बी अचीव्ड ताले से कोचन कोन जेहेतु समस्ते एटी ट्रेड ऑफ हेले ताले द एफिशिएंसी विल अचीव्ड एट दिस पॉइंट all agents face the same prices in perfectly competitive market all trade-offs rates will be equalized and an efficient allocation will be achieved at that point then this is the first theorem of welfare economics then we can explain this in the following figure then kona dekho pp is your production possibility curve this straight line is your price line this is your utility curve or indifference curve ताले slope of production possibility curve is equal to RTS slope of indifference curve is equal to MRS slope of price line is equal to ratio of their price एटी माइनस साइन काई अछि ना because it is negatively slope ताले बर्तन competitive equilibrium and efficiency in output mix will achieved कोडी at this point ए पॉइंट रे वर्तमान हमें अचीव करिवा को पॉइंट रे ना द पॉइंट over the production possibility curve
where indifference curve or utility curve is tangent to this and the price line will also tangent to both the curve at this point. ताले आमे तार डिडक्शन कौन पाइबा ना PP is the production possibility curve and preference is represented by the indifference curve. ताले preference curve now that is it is so about the preference of the consumer which commodity combination he will consume. ताले सेही पे हमें कहू जाकू preference curve बोली preference of a consumer will be determined over this curve. ताले suppose एई पॉइंट रे देखो मु आरो दउची एठी गोटे कमोडिटी बंडल रहला एठी गोटे कमोडिटी बंडल रहला ताले जेहेतु दीटा जंक कमोडिटी बंडल गोटिए द सेम यूटिलिटी कर्व ऊपर अछि ताले एनी कमोडिटी बंडल ही विल चूज विल प्रोवाइड द कंज्यूमर इक्वल लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन सेम सैटिस्फैक्शन प्रदान करिवो ताले ता द्वारा कोन हबो द कंज्यूमर विल रिमेन इंडिफरेंट अमंग these 2 points or between these 2 points. ताले जेते नंबर ऑफ कमोडिटी बंडल्स आ ऊपर रहला ताले समतम विषय रे सी इंडिफरेंट रहइबो ताले किछि परिवर्तन होबो नै काहे कि ना सी जदी एठी तीनटा अछि ए ई बी एठी रहला बी एठी रहला ए ताले ही विल बी इंडिफरेंट बिटवीन ए ई एंड बी ताले ए इज प्रिफर्ड टू ई इज प्रिफर्ड टू बी B is preferred to E is preferred to A. Then that means kona na he will remain indifferent among these. Then jodi jemti ame koche if A is preferred to B is preferred to B. A gote axioms of indifference preference rahila. A gote commodity bundle, B gote commodity bundle. Jodi dite janka commodity bundle ame tulana kariba. If consumer prefers A than B and B prefer A to B and again prefer B to A, then he will be indifferent among the between these two commodity bundles. That means A and B commodity bundle will provide the consumer equal level of satisfaction. Then therefore, एठी हमें कौन कहूचे ताले एई पॉइंट रे जेतेबेले स्लोप ऑफ ऑल दीज थ्री लाइन्स कर्व तीनोटी जंक रेखार स्लोप जदि एठी कोन हैला इक्वल हैला ताले हम कोन पाइले represent the indifference curve u0 ताले preference is represented by the indifference हम सेठी कहले कोन it is clear that x star y star represent the efficient output mix ताले जेहेतु तीनोटी जंक रेखार प्राइस लाइन ताले प्राइस लाइन is tangent to the indifference curve that is consumer equilibrium at point ताले production will taken place or efficiency in production will achieve that point E. Then that means output mix tale se maximum satisfaction paila efficient satisfaction sabuto highest maximum satisfaction paila maximum output tiyari kala tenu efficiency in allocation efficiency in production will be achieved there. The allocative efficiency and productive efficiency will be achieved there. ताले सेहित पे हम कोन पाइले व्हाट इज द कंडीशन हम तार कंक्लूजन ड्रॉ करछे एठी ताले 8.e mrsxy and mrtsxy and px by py are equal ताले mrsxy कोन ना दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y ताले एटा कोन एटा कहार स्लोप ना एटा होची इंडिफरेंस कर्व द स्लोप mrtsxy ताले एटा कहार स्लोप now this represents the slope of production possibility curve tale px by py this ratio represents the slope of price line tale at point E all these three slopes are equal tale again dekhiba the price mechanism ensures that not only that production is technically efficient but also that the forces of supply and demand lead to the Pareto efficient in output combination tale एहार अर्थनीतिज्ञ एठी कौन धारणा देले एथुर हमें कौन सिखिले ना प्राइस मेकानिज्म एन्श्योर्स निश्चित भाव में धारणा देला कौन नॉट ओनली दैट प्रोडक्शन इज टेक्निकली एफिशिएंट जोति की आउटपुट हमें तैयारी कले से खाली जे दक्षता प्राप्त हैला ताहा नुए ताले आउ कौन हैला ना द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ताले जोगाण एवं चाहिदार शक्ति और रेखा lead to Pareto efficient output combination
ताले एई जो तीनोटी जांक स्लोप इक्वल हैला कार ना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर यूटिलिटी कर एंड तमर प्राइस लाइन ताले कोन हैला सेतरे पैरेटो एफिशिएंट ऑफ आउटपुट कॉम्बिनेशन को सैटिस्फाई कर संतुष्टि कर ताले जेहेतु एतिक जिनस संतुष्टि प्राप्त हेले एठी ताले दिस थ्योरी इज नोन एज फंडामेंटल थियोरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स ताले या गोटिए कोन ना कल्याणकारी अर्थनीति रो फंडामेंटल थियोरम फंडामेंटल तत्व बोली हमें कहबे। थैंक यू वेरी मच।